Good morning, children. We are doing Standard 9 Geometry, Parallel Lines chapter. We are doing practice set exercise 2.2. Yeah, practice set 2.2, and I'm doing question number 4 of it. Okay, I'm continuing. This is my lecture number 5, children. Now look at this sum, children. Very simple sum, very important sum. Ray BA is parallel to ray D. Can you see this ray BA, children? I put an arrow on it. Ray BA is parallel to ray D. These two rays are parallel. लेकिन ये दोनों रेज पैरेलल दिख रहा है बेटा, और उसमें उन्होंने ये एंगल डी का मेजर दिया 100 डिग्री, ये एंगल बी का मेजर दिया 50 का मेजर दिया 50 डिग्री, एंड दे वांट मी टू फाइंड एंगल ए बी सी. ये दो पैरेलल लाइंस दिख रहा है बेटा, लाइन डी एंड रे बी एंड रे बी दे आर पैरेलल, तो उनका ट्रांसवर्सल नहीं दिख रहा है. ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? जो लाइंस पैरेलल रहता है ना, दो लाइंस पैरेलल रहेगा. प्लीज आप लुक एट इट. व्हाट इज ट्रांसवर्सल बेटा? The two lines are parallel. Two lines are parallel. If the line which cuts both of them is called a transversal. This transversal is not seen, children. This transversal is not seen. Got it? So what I do? Transversal, direct transversal is not there. So either I should draw a transversal for both of them or something else. So I realize why they have made this extension DC and BC. एक आइडिया अलग से आ जाता है. अरे एक्सटेंशन के कारण मैं क्या कर रहा हूं? I draw a line passing through C. I draw a line passing through C. This black color line is what I have drawn it. I call it as PQ. What do I call it as? PQ. ये मैंने ड्रॉ किया, एक कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा. जब भी आपको कंस्ट्रक्शन दिखा, आपने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन, आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन यू ड्रॉ? यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, लाइन, draw a line PQ, passing through C, parallel to ray D. Passing through C, parallel to ray D. Passing through C, you can see passing through what, children? C. But parallel, passing through C, parallel to ray D. That means, देखो बेटा, ये जो PQ है ना, PQ, you can see once again, children, this PQ, what I've drawn, is parallel to what DE, is parallel to what D. But you know, children, BA is also parallel to D. BA is also parallel to D. Oh, then I can say PQ parallel, BA parallel, D, all three are parallel. Once again, I repeat. Look at line PQ. I have drawn it parallel to D. But you know, children, your ray BA is parallel to D. That means all the three become parallel. I'll just show it to you, children. This line PQ, please have a look here, is parallel to ray D. Line PQ is parallel to ray D. I call it as one by construction. By construction. Okay? This is what construction. We did it construction. But this ray BA is parallel to ray D, is given to us. So please look here, children, transitivity, same ray D. PQ is parallel to D, BA is parallel to D. अरे दोनों same ray को parallel है. Therefore, what am I going to say? Therefore, line PQ is parallel to ray BA, parallel to ray DE. I just say from 1 and 2. So all the three lines are parallel. Don't you agree? All the three lines are parallel. अभी देखो बेटा, PQ और DE का ट्रांसवर्सल है DC. Can you see DC is a transversal? DC is a transversal. For line PQ and D, DC is a transversal. For line PQ and D, DC is a transversal. For line PQ and D, DC is a transversal. तो आपका ये जो एंगल D 100 डिग्री दिया, उसका मदद से कौन सा एंगल मिलेगा? So anybody can guess it. अरे I can easily get DCQ. I can easily get DCQ. So see here, what I do, पहला on transversal, DC, can I say angle D, single letter name for angle D, but here DCQ, you have to write compulsorily 3 letter name क्योंकि C में बहुत सारा angles है. So DCQ 3 letter name by interior angle here, by interior angles here, by interior angles here. Now you put a value straight up.
डी का वैल्यू कितना 100 प्लस एंगल DCQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCQ मिल जाता है इधर कितना बेटा, एंगल DCQ इक्वल 180 माइनस 100। तो एंगल DCQ इक्वल प्लीज have a look here 80 degree. So here please here substituted angle D का जगह में, since angle D equal 100 degree, क्या put okay? So I just write that, okay? Now you can see DCQ I got. देखिए DCQ मिल गया बेटा, DCQ वापस मार्क करता हूँ बेटा, सबको दिख सकते हैं DCQ। I'll mark it once again. The angle DCQ is this angle बेटा, this is 80 degrees I got. अब ये दोनों का मदद से बेटा जो एग्री, the moment I mark I realize अरे अभी I can easily find DCQ, दोनों का ऐड करके DCQ मिल जाएगा। तो लिसन, DCQ मिलने के बाद तुरंत मुझे BCQ मिलता है। BCQ इज इक्वल टू एंगल BCD प्लस एंगल DCQ, इसको बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। जब भी हम तो एडजेसेंट एंगल को देखेंगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, जब भी ऐसा तो एंगल को देखेंगे, what is आजू बाजू वाला एंगल, you can add and get a bigger angle, we call it angle addition property. So what is it? Angle BCQ equal, how many you get children? Angle BCQ equal, BCD कितना था बेटा 50 डिग्री दिया था, और ये कितना है 80 डिग्री दिया है। You can write here since angle BCD equal 50 and angle BCQ equal 80. Let's say I put this value. So angle BCQ equal कितना मेरा बेटा 130 degrees, 130. But this is not the answer. Still I not got an answer. I got angle BCQ. Angle BCQ. लेकिन प्लीज हम लोग क्या, मुझे तो ABC मांगता है। अरे बच्चों ने एग्री चलो ऑन ट्रांसवर्सल BC पैरेलल लाइन है, तीनों लाइन पैरेलल हमने प्रूव कर दिया। तो ऑन ट्रांसवर्सल BC देखो, ये एंगल जो ABC है एंगल ABCD, what is angle ABC equal angle BCQ children? What is the reason children? By alternate angle theorem. When the lines are parallel, alternate angles are equal, alternate angle theorem. Alternate angle theorem, okay? So what is angle ABC equal children? Therefore, angle ABC will be equal to कितना? You can see actually how much we got BCQ as 130 degrees. So naturally it will be 130 degrees since angle BCQ is 130. So I hope everybody got this. This is an answer for it, children. What is it? This, please have a look. I'll just write it properly. This is 130 degrees. This is 130 degrees. What is this? 130 degrees. Got it? So this is an answer, children. I better put it in a box, okay? Put it in a box, okay? So now look here, children, one more thing. Once again, I'll tell you. With the help of angle, मैंने क्या किया बेटा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, PQ, ब्लैक कलर लाइन दिख रहा है PQ. I have drawn it passing through C, parallel to B. तब ये PQ पैरेलल D है, PA भी पैरेलल D है, तो तीनों पैरेलल बन जाते हैं आपस में, PQ पैरेलल BA पैरेलल D, तीनों आपस में पैरेलल। अभी देखो DC ट्रांसवर्सल को देखो, एंगल D कितना 100, उसका मदद से ये जो एंगल मिल जाएगा इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज करके, एंगल DCQ कितना मिल जाएगा 80। जैसे ही एंगल DCQ मिल गया, उसका मदद और 50 डिग्री का मदद से बड़ा एंगल BCQ मिल गया। जैसे ही BCQ मिल गया 130, वैसे ABC मिल जाएगा, ABC equal BCQ. Are you getting me? ABC 130. I hope people understood it. Not a difficult sum, children. 2-3 times you have to write it down. Then perhaps you may find it easy to understand. Okay? I'm sure. Okay, we go to the next sum. Now we are coming to some very important stuff. Okay? So children, before I start to the next sum, some concepts. Okay? Now listen, suppose there are 2 sticks. Okay, 2 लकड़ी है। ओके, दोनों लकड़ी का लेंथ बराबर है, दोनों लकड़ी का लेंथ इक्वल है, दोनों लकड़ी का लेंथ इक्वल है, बड़ा छोटा नहीं है, दोनों का लेंथ इक्वल है। ओके, अभी पहला लकड़ी को एग्जैक्टली उसका मिड पॉइंट में, इधर मिड पॉइंट आ गया, सॉरी मिड पॉइंट में तोड़ देता हूँ। ओके, और दूसरा लकड़ी को भी बराबर उसका मिड पॉइंट में तोड़ देता हूँ।
ये जो दोनों पार्ट है, और अभी जो दोनों पार्ट है जिसको मैं रेड कलर में दिखा रहा हूं, ये दोनों पार्ट, ओके, ये पार्ट रेड और ये भी पार्ट रेड, ये दोनों पार्ट, सॉरी, ये दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे बेटा। दोनों बड़ा लकड़ी इक्वल है, और दोनों लकड़ी को एग्जैक्ट है, दोनों लकड़ी का लेंथ इक्वल है बेटा, दोनों लकड़ी का लेंथ इक्वल है, दोनों लकड़ी का लेंथ इक्वल है। ओके, ये लकड़ी को मिड पॉइंट एम में तोड़ता हूँ, ये लकड़ी को भी मिड पॉइंट एम में तोड़ देता हूँ। तो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ओके, ये जो पार्ट है मिड और ये जो पार्ट है, वो इक्वल रहेंगे क्या? तो आपका मन में तो है, हाँ इक्वल ही रहेंगे। अरे बड़ा लकड़ी इक्वल है और दोनों को मिड पॉइंट में तोड़ता हूँ तो ये पार्ट तो इक्वल ही रहेगा। लेकिन ये समझ में आ गया, ये ज्योमेट्री में लिख के दिखाना है, दैट राइट, ज्योमेट्री चिल्ड्रन, and that is why children find geometry difficult. So let's try to understand how do you write it, okay? So I'll just show you children my way, simple way. Okay, suppose this is a segment, okay, not a stick. I call it as a segment AB. This segment AB and CD are equal in length. They are equal in length. M is the midpoint of segment AB, N is the midpoint of segment CD. So this AM and CN, you have to show them equal. You understand they're equal, but how? So listen, the way we write, okay? So first I'm going to write this AB, the big segments which are equal. What is given? I'm going to write that AB equals CD given. Got it? Now just tell me, this segment AM, इसका लेंथ कितना रहेगा? Don't you agree? It's half of AB. और CN का लेंथ कितना रहेगा? Half of AB. तो इसके लिए मैं सेकेंड स्टेप क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई करके हाफ AB और हाफ CD को, ये AB और CD को हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हाफ AB इक्वल हाफ CD, एंड आई कॉल दिस एज 1। इसको रीजन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, अलजेब्रिक स्टेप है, AB और CD इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल हो गया। अब भी आप देखिएगा आपका जो AM है वो क्या है बेटा? हाफ AB है। क्यों AM हाफ AB है बच्चे लोग? स्टेप नंबर 2, बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसके लिए AM इज हाफ AB। और वैसे ये CN क्या है बेटा? CN किसके बारे में? CN इज हाफ CD, N is midpoint of CD, N is midpoint of CD, N is midpoint of CD. तो नेचुरली अभी आप देख सकते हो इसमें राइट हैंड साइड, ये दोनों में ये राइट हैंड साइड है, ओके, हाफ ए बी, स्टेटर नंबर 1 एंड स्टेटर नंबर 3 में ये जो राइट हैंड साइड है हाफ ए बी और हाफ सी डी, दोनों बॉक्स में डाल देता हूँ। ये हाफ ए बी और हाफ सी डी आपको समझ में आते हो, दोनों इक्वल है। यू कैन सी इट फ्रॉम स्टेटर नंबर 1 that this right hand side portions are equal. From statement number 1, you can see half AB and half CD, the right hand side of 2 and 3 are equal. When the right hand sides are equal, naturally I can say the left hand side is equal. Therefore, I can just say AM equals CN from 1, 2 and 3. I hope people understood me, a very simple proof. This is the way you have to write. Got it? फिर से बोलते हैं, इधर क्वेश्चन डिक्शन लिखा नहीं है, समझ में आ जाओ। ये पूरा सेगमेंट AB और CD का लेंथ इक्वल है। M is the midpoint of AB, N is the midpoint of CD. तो AM और CN को इक्वल कैसे दिखाएंगे? आपको समझ में आ जाता है AM और CN इक्वल है, ये लिखने का तरीका कैसा है? तो देखो ये बड़ा सेगमेंट AB और CD इक्वल है और AM आपको मांगते हैं इक्वल टू CN। तो AM क्या है? एक्चुअली हाफ AB है, CN क्या? हाफ CD। इसके लिए मैं half AB equal half CD लिख देता हूँ। Second step, I just multiplied with half on both sides, so no reason for it. Now look at your AM. What is AM equal? Half AB. Can I say M is the midpoint of AB? What do you know about CN? CN is half CD, N is midpoint of CD. But now this half AB and half CD are equal, so can I say AM equals CN? Got it? In the same way, children, I'm going to show you now another thing, okay? Another concept. So same in the same way. Try to understand, children. Very simple. Suppose there are two angles, okay? This is one angle. Please have a look here. This is one angle. This is another angle. Both these angles are equal in measure. जैसा सेगमेंट का लेंथ इक्वल था, वैसे ये एंगल ABC है, ये एंगल PQR है, ये दोनों का एंगल, ये गिवन मैं बता रहा हूँ, ये दोनों का मेजर इक्वल है। एंगल ABC और एंगल PQR का मेजर इक्वल है। गॉट इट? अभी मैं बता रहा हूँ ये रे BD जो है, रे BD इसका इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC।
ray BD is a bisector of angle ABC, and ray QS is a bisector of angle PQR. I repeat, ray BD is a bisector of angle ABC. Got it? And ray QS is also a bisector of angle PQR. So now, can you prove, children? Just try to understand. Then this angle ABD and this angle PQS, will they be equal? What is so? Again, in my given information, I'll just show it to you, children. Ray BD is bisector of angle ABC, bisector of angle ABC, and ray QS is bisector of angle PQR. So देखो दोनों बड़ा एंगल इक्वल उनका बाइसेक्टर दिया है. So if I say prove that the small angle ABD equal angle PQS, don't agree? अरे बड़े दोनों एंगल्स इक्वल है बेटा, बड़े दोनों एंगल्स इक्वल है, ओके. और अब देख सकते हो BD बाइसेक्टर है, QS बाइसेक्टर है. तो नेचुरली दोनों छोटे एंगल्स इक्वल रहेंगे क्या? समझ में तो आता है इक्वल ही रहेगा. तो अगर बड़ा एंगल 60 है, दोनों बड़ा एंगल 100 डिग्री है, तो बाइसेक्टर डिवाइड्स एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, फिर दोनों छोटे एंगल 50-50 हो जाएंगे, तो दे विल बी इक्वल. लेकिन प्रूफ वे में कैसे लिख के दिखाएंगे आप? तो मैंने अब भी एक कंसेप्ट सिखाया था, सेम वे में सेगमेंट्स का था, वैसे एंगल्स का क्या करना हो. हाउ विल आई शो ABD and PQS equal? So first, what am I going to write? I'm going to write the big angles which are equal. Angle ABC equal angle PQR. Sorry, angle ABC equal angle PQR. Angle ABC equals angle PQR. Sure, children. Given. So what will happen, children? I want actually small angle ABD and PQS equal. This ABD, what is the relation of ABD with ABC? ABD is actually half of ABC. And what is this PQR actually? PQR is also half of PQR. PQS is also half of PQR. So I get an idea. What am I going to do? ABC equals PQR. So my next step, I'm going to write, therefore, half angle ABC equal half angle PQR. Since the big angles are equal, the halves are equal. Okay. Now go after ABD. What is ABD? What you can say about ABD? I know BD is a bisector. So naturally ABD is half of ABC. Got it? Figure number 2, ray BD is bisector of angle ABC. Ray BD is bisector of angle ABC. Okay. In the same way, what can I say about angle PQS? This angle PQS, you can always say it is half of angle PQR. Children, why in the statement number 3, I can say ray QS is bisector of angle. Ray QS is bisector of angle PQR. Now look at it, children. Don't you agree? From your statement number 2 and 3, you can see, children, the right hand side of 2 and 3, half ABC and half PQR. This right hand side, don't you agree? They're actually equal. You can see here, children. From statement number 1, you realize that half ABC and half PQR are actually equal. That means from 1, 2, and 3, I can say, children, angle ABD is equal to angle PQS from 1, 2, and 3. I hope people are understanding. तो याद रखो बेटा, ये बाइसेक्टर वाला सम, बड़ा एंगल्स इक्वल है, उसमें से छोटे एंगल्स इक्वल होते हैं, किस तरह से दिखाना है. और I can put it in a reverse way. Okay, I can give you another question, little slightly opposite of this. Suppose there are two angles, children. There are two angles. Okay, this is one angle. Okay, and this is the other angle. Both are big angles. We don't know whether they're equal. मालूम नहीं है. दोनों एंगल बड़े एंगल्स, पहला वाला सब में क्या था, दोनों बड़े एंगल्स इक्वल थे, मालूम थे. लेकिन अब भी दोनों एंगल्स इक्वल है, मालूम नहीं है. लेकिन और दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है. करेक्ट. लाइक BD इज अ बाइसेक्टर, QS इज अ बाइसेक्टर. ये दोनों बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया उन्होंने. ओके, ये दोनों बाइसेक्टर ड्रॉ किया है.
लेकिन अभी क्या इक्वल और मैं बाइसेक्टर तो ड्रॉ किया है। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये दोनों छोटे एंगल्स, ठीक है, ये दोनों छोटे एंगल्स में ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ABD और PQS. Got it? So what is given is, just have a look here. Given क्या है? Ray BD is bisector. Ray BD is bisector of angle ABC. Ray BD is bisector of angle ABC. Ray QS is bisector of angle PQR. Ray QS is bisector of angle PQR. But this big angle ABC and PQR are not equal. But you know, children, this small angle ABD, what you can see that is equal to small angle PQS. Now the small angles are equal, children. So will the big angles be equal? Will the big angles be equal? Earlier in the previous question, the big angles are equal. From that you have to show the small angles equal. अभी ये उसका कॉन्वर्स जैसा उल्टा है, बड़ा एंगल्स है, उनका बाइसेक्टर्स दिया है, लेकिन एक छोटा एंगल इक्वल. So will the big angles be equal? Yes, they will be equal. Then how do we go about writing a proof for this? So look here, so simple. Okay, same way, what is equal, what is given, you better write on it, very dependent on it. What is that? ABD equal PQL. हमेशा की हिंट है आपका, छोटा दोनों एंगल्स इक्वल है, गिवन है. अभी इसको 1 बोल दिया, लेकिन आपको ये छोटा एंगल ABD के बारे में आप और क्या बोल सकते हो? अरे इट इज हाफ ऑफ एंगल ABC बोल सकते हो, क्योंकि BD इज अ बाइसेक्टर. रे BD bisects angle ABC. Ray BD is bisector of angle ABC लिख सकता हूं. Okay. In the same way, angle PQS. Just have a look at angle PQS is half of angle PQR. Reason Ray QS is bisector of angle PQR. And just have a look at it. This ABD and PQS, don't you agree they are equal? Statement number 1, ABD and PQS are equal. So can I say that for half angle ABC is equal to half angle PQR? Can I say from 1, 2 and 3? 1, 2 and 3. Now you can see, please have a look here. Because ABD and PQR, the left hand sides are equal. You can see this left hand side, they are equal, you come to know from your statement number 1. So naturally the right hand side is equal, then half gets cancelled. So ABC equals PQR. So I hope people are understood. In the previous part, I'm so sorry about my handwriting. In the previous part, I had shown the big angles are equal, and from that the bisectors are given of the big angles. You have to show the small angles equal. Now what is that? There are two big angles. The bisectors are given, but the small angles made by the bisectors are equal. You have to show the big angles equal. I hope everybody will recollect this concept very clearly. If you understand this, I can make you realize this next sum. What I'm going to do is very simple and very easy. 2 more sums I'm going to do, children. You have to find them easy. Very important. One will surely come in your exam. Children, discussion number 5 and question number 6 of exercise 2.2. I'm doing it together on either side. Okay. So try to understand, try to compare them. Okay. Because of this 2 questions, 1 question has to come in your exam for sure, children, for sure. Now just have a look here. What is given to us? I'll just say ray AE parallel ray BD. Ray AE parallel ray BD. Ray AE parallel ray BD. देखो रे ए किधर है बेटा? आप देख सकते हो इधर रे ए इधर आया. रे ए, कैन यू सी दिस? रे ए parallel ray BD. This ray and AE and BD are parallel. This AE and BD are parallel. These 2 rays are parallel. These 2 rays are parallel. Since they are parallel, beta, I'll try to put the same arrow on both of them. Okay, can I put this arrow like this on top? Okay. Can you say these 2 are parallel? Ray AE and ray BD are parallel. Ray AE and ray BD are parallel. And now look here, children. What they're saying is this ray
AF, ray AF is a bisector. Ray AF is a bisector. This ray AF is a bisector. Bisector of angle EAB. Angle EAB. Bisector of angle EAB. मतलब bisector क्या करता है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. मतलब EAF और FAB एंगल इक्वल हो गया. AF is a bisector of angle EAB, children. This big angle. Correct. AF is a bisector of angle EAB. That means EAF and FAB are equal. Angle EAF and angle FAB are equal. In the same way, children, when you look at it, ray BE is a bisector. Can you see this? BE is a bisector. BE is a bisector of angle. Please have a look at this. Ray BE is a bisector of angle ABD. Can you see this big angle ABD? ABD. BE is a bisector of angle ABD. That means these two small angles are equal. That is angle ABC and angle CBD are equal. Okay. So I hope people can see this, children. The lines on which I put arrows. Okay. Can you see this red color lines on which I put arrows? They are parallel. Okay. And AF is a bisector of angle EAB. BE is a bisector of angle ABD. मतलब आपको प्रूव करना है जिस बाइसेक्टर्स AF एंड BC आर पैरेलल. आपको प्रूव करना है बाइसेक्टर्स आर पैरेलल. आपको प्रूव करना है बाइसेक्टर्स आर पैरेलल. व्हाट इज सो सिंपल चिल्ड्रन. जब भी आपको दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, पहले लाइंस को ढूंढो बेटा. आपको कौन सा दो लाइंस पैरेलल प्रूव करना है? AF और BC. So look at these two lines first. Carefully look at these two lines, children. AF and BC in the picture. You can see, and which is a transversal for them. Do you agree? AB is the transversal, AB is the transversal. So on that, what pair of angles do you see? Can you see this angle, children, which I'm marking? Angle FAB on this transversal AB. And can you see this angle ABC, which I'm marking ABC? The yellow angles which I marked. Okay, if yellow is not seen, children, I'll try to mark with some other angle. Can you see this angle? Can you see this angle? Okay, this angle. What is this angle, children? Can you see this angle which I shaded here? Angle FAB. And can you see this angle which I'm shading it here? Okay, can you see this angle, children? Can you see this angle? What is it? ABC. What pair? This angle which I shaded. What pair of angles are they making? You can see they are making alternate angles. लेकिन ये एंगल्स इक्वल नहीं है बेटा, बिकॉज ये दोनों रेस पैरेलल नहीं है. तो अभी आपको AF और पैरेलल BC प्रूव करना है. तो यू सी आपने क्या किया? AF और BC को देखा पहला, फिर उसका ट्रांसवर्सल ढूंढा. AB ट्रांसवर्सल है, उस पर आपने एंगल FAB और एंगल ABC आइडेंटिफाई किया. ऑल्टरनेट पेयर है. अगर ये ऑल्टरनेट पेयर एंगल इक्वल हो गया, आई कैन से AF पैरेलल BC. तो अभी आप देख सकते हैं कि बड़ा एंगल्स इक्वल है. क्या के लिए? सी रे AE पैरेलल रे BD. रे AE is parallel to ray BD. Ray AE is parallel to ray BD. Red lines are parallel. That means when the lines are parallel, the alternate angles are equal. I can say this big angles are equal. Can you see? EAB equal ABC. लेकिन आपको एक छोटा एंगल्स इक्वल दिखाना है. बड़ा एंगल्स इक्वल है, छोटा एंगल्स इक्वल दिखाना है, और उनका बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया. बाइसेक्टर्स बड़े एंगल का बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया. जो बड़े एंगल्स इक्वल है उनका बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया. जो बड़े एंगल्स इक्वल है उसका बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया. और आपको जो शेडेड एंगल्स इक्वल मांगता है, हाँ इक्वल तो रहेगा ही. अरे बड़े एंगल्स इक्वल है और ये बाइसेक्टर्स है, तो छोटा एंगल्स इक्वल रहेगा ही. लेकिन प्रूव कैसे करना है? तो हमने बताया था आपको. तो सी चिल्ड्रन हाउ वी गो अबाउट राइटिंग द प्रूफ. फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेंशन children, try to understand. First I'm going to mention this line A. What there's ray, whatever they called it, ray A. Can you see this ray A, children? Parallel ray BD. These two lines, red lines I marked here, their parallel is given to us. Okay, when the lines are parallel, children, naturally on the, I look at the transversal and I can see that alternate angles present here. So naturally they are going to be equal. So angle, can I say angle EAB, this big angle EAB equals this big angle ABD. What is? Please have a look here. This big angle EAB equal angle ABD. Can I say by alternate angle theorem? Can I say by alternate angle theorem? By alternate
angles theorem. Whenever lines are parallel, you use alternate angles theorem. Whenever lines are parallel, we use this theorem. Alternate angles AB equal ABD. But I want the small shaded angles equal. अरे बड़ा एंगल इक्वल मालूम पड़ेगा लेकिन शेडेड एंगल इक्वल मिलता है तो एक्चुअली ये जो शेडेड एंगल एफ ए बी है उसका रिलेशन क्या है बड़ा एंगल ए बी के साथ एफ ए बी इज हाफ ऑफ ए बी यू अंडरस्टैंड बिकॉज ए इज अ बाइसेक्टर so I get an idea and likewise इधर भी शेडेड एंगल क्या है रिलेशन ए बी डी के साथ ABC is half of ABD so I get an idea what am I going to do EAB equal ABD so purposely I multiply by half on both sides so half EAB equal half angle ABD and I call this as 1. No reason for it because this is an algebraic step. The two big angles EAB and ABD are equal. So the halves are equal. Now go after your angle, the shaded angle. Which is shaded angle we have marked here? FAB. Just look at FAB children. What is angle FAB equal? FAB is equal to actually half of angle EAB. Why children? Because you can EAB. Okay. The reason is very simple because ray AF bisects angle EAB bisects angle EAB. Got it? In the same way, this shaded angle ABC which you want, what you can say about it? This ABC is also half of angle ABD children. Okay, ABD. What's the reason children? So also you can say ray BC bisects angle ABD children. And now when you look at it children, the right hand side of 2 and 3, the right hand side of 2 and 3, just I'll show you children. Can you see this right hand side of 2 and 3? Half ABC and half ABD. Children, the right hand side of 2 and 3, half ABC and half ABD. You can see this right hand side of, okay. Right hand side half EAB and half ABD. Totally they are equal. You come to know from your statement number 1. From statement number 1, you can come to know the right hand sides are equal children. The right hand sides are equal. So when the right hand sides are equal, can I say the left hand side is equal children? Therefore, can I say angle FAB equal angle ABC children? Reason for it. From 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3. Now look at this. FAB, the shaded angle FAB and ABC are equal. So therefore, alternate angles for ray AF and ray BC are congruent. The alternate angles are congruent children. Are congruent. Therefore, can I say ray is alternate angles are congruent? I can say the lines are parallel. Therefore, ray AF is parallel to ray BC. Got it? By alternate angle test. By alternate angle test. Alternate angle test. Got it? So here you can see here children. The sides of the angles, the big angles are given parallel and the bisectors of the angles are given. You have to prove the bisectors are parallel. You have to prove the bisectors are parallel. Got it? Just look at the sum, children. The sides of the angles are parallel and bisectors of these angles are given and you have to prove the bisectors parallel. तो उसमें बड़ा angles equal थे आपको छोटा एंगल बाइसेक्टर्स के कारण बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद वो छोटा एंगल से इक्वल दिखाना था ये सम याद रखिए ओके अभी ये सम द नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 6 उसका उल्टा है इन दिस सम द बाइसेक्टर्स आर गिवन पैरेलल टू just have a look at the bisector right when you look at it rape here please here a transversal ear they are showing here clearly a transversal ear of two lines. Okay, this line AB and line CD. There are two lines. I don't know whether they are parallel. Two lines again. Got it? Lekin they do bada line is cut by a transversal also. You can see the transversal also. Like children,
This line is a transversal. You can see here, the line is a transversal. And then, like EF, this line is EF, children. I call it as EF. I name it FS is not marked, but EF. Okay, EF is a transversal. दो बड़े लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, बड़े लाइंस पैरेलल नहीं मालूम, करेक्ट? और क्या दिया है, उनके ऑल्टरनेट एंगल्स का बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया गया है. आप देख सकते हो, this PR is a bisector, PR is a bisector and QS is a bisector. You know, bisector divides the angle into two equal parts. These angles are equal, the small angles are equal. And this bisectors are given parallel. The bisectors are given parallel. Bisectors are given parallel. Got it? और आपको क्या प्रूव करना है? दिस लाइन ए बी पैरेलल लाइन से भी. इसमें क्या था? द आउटर साइड लाइंस आर पैरेलल. आपको बाइसेक्टर्स प्रूव करना था पैरेलल. इधर क्या है? बाइसेक्टर्स पैरेलल है, आपके बड़े लाइंस पैरेलल प्रूव करना है. सो वेरी सिंपल चिल्ड्रन. द थॉट ऑफ मेकिंग इट, द थॉट ऑफ डूइंग इट सेम. जो भी लाइंस को आपको पैरेलल प्रूव करना है, ए बी और सी डी, उनका ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो उसको पर ट्रांसवर्सल के ऊपर जो ये जो बड़े एंगल्स है ना, ग्रीन एंगल जो इक्वल नहीं है, दे ऑल्टरनेट एंगल. अगर ये दोनों बड़े एंगल्स इक्वल हो गए तो आप लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी बोल सकते हैं. आई रिपीट, आई वांट टू प्रूव लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी. गॉट इट? EF is a transversal. So what pair of angles are formed on it? You can clearly see this angle, big angle, what is that? BPQ. And this big angle CQP. They are alternate angles on it. अगर ये alternate angles equal हो गए तो लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी. लेकिन alternate angles equal कैसे दिखाएंगे? So given information is a hint. What is given, children? They are given us this ray. They are given us ray PR is parallel to ray PR is parallel to ray QS is given. When two rays are parallel, children, when two rays are parallel, look at the transversal. PQ is a transversal. So naturally, can I say when the rays are parallel, the alternate angles formed on them are equal? So angle RPQ, alternate angle है, वो किसका साथ equal हो गया बेटा? Angle SQP. Got it? Angle RPQ is equal to angle SQP. Can I call this as 1 by alternate angle theorem? When the lines are parallel, the alternate angles are common. That's called alternate angles theorem. Alternate. Because I hope people are understanding. Sometimes the handwriting doesn't come good because you are writing it on a stylus and the stylus is very difficult to control the stylus. The handwriting comes very bad, but you have to understand it. You have to listen to me to understand the alternate angles theorem. Now look at this. I got the small angle. कौन सा small angle? RPQ दिख रहा है, और ये small angle SQP दोनों equal है. अभी आप देखिएगा, लेकिन मुझे तो बड़ा एंगल इक्वल मांगता है. तो RPQ है ना, RPQ किसका हाफ है बेटा? देखो, RQP is half of RPQ is half of angle BPQ. Can I say? Because ray, statement number 2, the ray PR is bisector of angle BPQ. And angle, just have a look at the small angle SQP. Okay, what is this SQP equal, children? This SQP is half of angle CQP. Can I say, children, statement number 3? What is the reason? Ray QS is bisector of angle CQP. But बेटा ये दोनों एंगल RPQ और SQP इक्वल है बेटा. ये RPQ and SPQ. Can you see this angle on the left hand side बेटा? This angle on the left hand side, can you see? These two angles, okay? I know they are equal. This angle RPQ and SPQ. You can see here from your figure number 1, you can see this left hand sides are equal, children. Okay, this left hand sides are equal, children. So naturally, children, when the left hand sides are equal,
when the left hand sides are equal, the right hand sides are equal, I can say. Therefore, can I say angle half of angle BPQ is equal to half of angle CQP, can I say from 1, 2 and 3, 1, 2 and 3. Now you can see half of that cancels. So what is getting angle BPQ is equal to angle CQP, can I say? Now look at this BPQ and CQP. Don't you agree? But BPQ and CQP are nothing but alternate angles. Therefore, alternate angles for lines AB and CD. For lines AB and CD are congruent. Therefore, line AB parallel line CD by alternate angle test. So these two sums, you know why? I know little. Why did I do it on one screen? To make you realize, देखो बेटा इसमें बाहर का लाइन एंगल्स का साइड पैरेलल था, आपको बाइसेक्ट उसको प्रूव करना था पैरेलल. क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो बाइसेक्टर्स पैरेलल दिया है वो आपको लाइंस पैरेलल प्रूव करना है. तो उल्टा है बेटा, बट बोथ आर वेरी सिंपल. ओके, यू अंडरस्टैंड, राइट इट डाउन and try to understand the difference. आप पता लगाना चाहेंगे अरे दोनों में फर्क क्या है खुद का मन से. ओके, आपको ये दोनों सम बहुत इजी लगेगा. ओके चिल्ड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों में एक तो आएगा ही आएगा, मतलब आएगा. दोनों सम में से एक सम आपको आना ही है चिल्ड्रन. ओके, आई होप यू विल डू इट चिल्ड्रन.